Assalamu alaikum. In this video lecture, we will be discussing some words of vocabulary. So let's start. So first word for today is propelling. The appropriate definition of propelling is to drive or push something forward. ठीक है, आगे की तरफ propel करना, ठीक है, तो उसके लिए हम जो है ना propelling का word use करते हैं. Example: the strong winds were propelling the sailboat across the lake. Synonyms includes pushing, driving, impelling, launching, motivating, spurring. Antonyms includes hindering, blocking, impeding, obstructing, retarding, slowing down. Passion basically refers to the strong and intense emotions or feelings, especially one that motivates a person to take an action. जुनून जो होता है ना उसको usually हम कहते हैं कि ये passion है, ठीक है? Its example includes she pursued her passion for music by starting her own band and writing songs. Synonyms include ardor, enthusiasm, zeal, fervor, excitement, dedication, and antonyms include apathy, indifference, lethargy, disinterest, passivity, and listlessness. Promptly का मतलब होता है to do something without delay or in a very timely manner, ठीक है. अचानक से कोई चीज कर लेना, ठीक है, उसमें डिले नहीं आना, ठीक है, और पूरे एक वक्त पर कर लेना. The teacher asked the students to turn in assignments promptly at the end of the class, ठीक है, उसके लिए हम ये जो है ना वो promptly का word use करते हैं. Synonyms इसके हैं अचानक से. Promptly usually अचानक से होता है. Quickly, hesitantly, instantly, immediately, punctually, expeditiously. Antonyms includes slowly, tardily, belatedly, leisurely, gradually, and delayed. Practically जो है ना ये होता है कि that जो चीज आप अमली तौर पर करें, रियलिस्टिक मैनर में करें, कोई चीज बहुत सेंसिबली हो, उसके लिए हम प्रैक्टिकली को वर्ड यूज करते हैं. ऑलमोस्ट, नियरली, ठीक है, ये सब प्रैक्टिकली के लिए यूज होते हैं. इसके एग्जाम्पल है आई हैव प्रैक्टिकली फिनिश्ड माई होमवर्क, आई जस्ट नीड टू चेक इट ओवर, ठीक है. Synonyms include virtually, nearly, almost, essentially, realistically, pragmatically. Antonyms include theoretically, hypothetically, abstractly, ideologically, and realistically. The word prone to means having a tendency or likelihood to do or experience something. यानी है कि chance अगर किसी चीज का है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूजुअली जो है ना वो prone to का word यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही इज prone to getting anxious during exams, यानी इस बात का इम्कान है या इस बात का चांस है कि वो जो है वो बेचैन हो जाए अपने इम्तहानों के दौरान. Synonyms include inclined to, susceptible to, predisposed to, apt to, liable to, deposited to. And antonyms include resistant to, immune to, and susceptible to, unlikely to, not prone to, या फिर averse to. Paraphernalia basically refers to the equipment or the items used for a particular activity or task. ये basically वो हथियार कह लें आप या फिर वो जो है ना अज़ा होते हैं जो आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. वो आप किसी खेलने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी इंजीनियरिंग के किसी मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए. यहाँ तक कि अगर कोई क्लाइंबर है तो उसकी भी जितनी भी सारी चीज़ें होंगी उसके पहाड़ के चढ़ने से मतलब जितनी भी अहम मुतलका चीज़ें होंगी, इन सबको मिल मिलाकर आप पैराफर्नेलिया कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द माउंटेन क्लाइंबर carried all the necessary paraphernalia such as ropes, carabiners, and harnesses. जैसे ये paraphernalia जो है ना वो डॉक्टर्स के होते हैं जो आपको पिक्चर नजर आ रहे हैं. Synonyms includes equipment, gear, apparatus, tools, instrument, and accessories. और antonyms की अगर मैं बात करूँ तो it's bare necessity, minimalization, simplicity, insufficiency या फिर inadequacy.
Prerogative basically means a right and privilege exclusive to a particular individual or class. For example, it's the employer's prerogative to offer flexible work arrangements to their employees. Synonyms include the entitlement, privilege, the advantage, right, benefit, exemption. Antonyms include the duty, obligation, restriction, limitation, disadvantage, and prohibition. This is all. इंशाल्लाह ताला बाकी words हम next video lecture में discuss करेंगे. Till then, thank you so much.